तो हम करने जा रहे हैं आज ऐसे 299 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स। A joint audit is an audit of affairs of an entity by two or more auditors appointed with the objective of such auditors are described as joint auditors. Okay. Audit planning, risk assessment and allotment of work. The joint auditor shall jointly establish an overall audit strategy that sets the scope, timing and direction of the audit. Prior to commencement of the audit, the joint auditors shall discuss and develop a joint audit plan. In developing the joint audit plan, the joint auditors shall identify division of audit areas and common audit areas, ascertain the reporting objective of the engagement, consider communication among all joint auditors, the factors that are significant, consider results of preliminary engagement activities or similar engagement performed earlier, ascertain the nature, timing and extent of resources necessary to accomplish the engagement. तो जॉइंट ऑडिटर्स को कभी जॉइंट ऑडिट प्लान डेवलप करते टाइम ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जो उन्हें आइडेंटिफाई करने चाहिए आपके जो डिवीज़न है ऑडिट एरियाज़ के एंड जो कॉमन ऑडिट एरियाज़ हैं। उसके बाद जो आपके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट है, कंसीडर कम्युनिकेट अमंग ऑल जॉइंट ऑडिटर्स, consider the result of preliminary engagement activities and ascertain the nature, timing and extent of resources necessary. Documentation of work allotted. The joint auditors shall discuss and document the nature, timing and extent of the audit procedures for common and specific allotted areas to be performed by each of the joint auditor. The joint auditor shall obtain common engagement letter and common management representation letter. After identification and allocation of work among the joint auditors, the work allocation document shall be signed by all the joint auditors. Responsibility of joint auditors. In respect of the audit of the work divided among the joint auditors, each joint auditor shall be responsible only for the work allotted to such joint auditor and including proper execution. On the other hand, all the joint auditors shall be jointly and severally responsible for the audit work which is not divided. जो audit work divide नहीं हुआ है. Decision taken by all the joint auditors under audit planning in respect of common audit areas concerning nature, timing and extent of audit procedure to be performed by each of the joint auditor. तो जो भी प्लानिंग के रिस्पेक्ट में जो भी कॉमन ऑडिट एरियाज़ में जो भी डिसीजंस वगैरह लिए गए हैं उसके लिए सभी ऑडिटर्स जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे. मैटर्स विच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स बाय वन ऑफ देम एंड ऑन विच देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स. कोई ऐसा मैटर जो किसी एक ऑडिटर ने बाकी ऑडिटर्स के सामने लाया है और उस पर उन्होंने सबने साथ में एग्रीमेंट किया है, वो उसके लिए भी सभी लोग लाइबल होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे. एग्जामिनिंग दैट द एफएस ऑफ द एंटिटी कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिलेवेंट स्टैट्यूट्स, ये भी इसमें आपके सभी जॉइंट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे. प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द एफएस रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल एफआरएफ, इसमें भी आपके सभी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे. एंड इंश्योरिंग दैट द ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलिवेंट स्टैट्यूट्स, द एप्लीकेबल एसे एंड द अदर रेलिवेंट प्रोनाउंसमेंट्स issued by ICAI. Audit conclusion and reporting. Joint auditors are required to issue a common audit report. However, in case of any disagreement among the joint auditors with regard to the opinion or any matter to be covered by the audit report, they shall express their opinion in a separate audit report. वैसे तो जो है कॉमन ऑडिट रिपोर्ट ही आपको इशू करनी होती है, लेकिन अगर कोई डिसएग्रीमेंट है अमंग जॉइंट ऑडिटर्स तो जिसका भी अलग ओपिनियन है वो एक अलग अपनी सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दे सकता है. A joint auditor is not bound by the views of the majority of the joint auditors. In case of separate reports, the joint auditors shall make a reference in the separate audit report issued by the other joint
issued by the other joint auditor. Such reference shall be made under the other matter paragraph. अगर कोई सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दी गई है तो अदर मैटर पैराग्राफ में उसका रेफरेंस दिया जाएगा कि इस ऑडिटर ने अलग सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दी है. रिव्यू ऑफ द वर्क बाय जॉइंट ऑडिटर्स. रिव्यू की कोई ज़रूरत नहीं है. ईच जॉइंट ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट बाकी ऑडिटर्स ने अपना जो काम है वो एकदम अकॉर्डेंस विद एसेस किया है. कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस. व्हेन द जॉइंट ऑडिटर expect to modify the opinion in the auditor's report, they shall communicate with TCWG the circumstances that led to expected modification and proposed wordings of the modification. If the joint auditors expect to include an EOM or OM paragraph in the auditor's report, the joint auditors shall communicate with TCWG regarding and proposed wordings. Advantage and disadvantages of the joint auditor. In specific terms, the advantage: sharing of expertise, advantage of mutual consultation, lower workload, better quality of performance, improved service to the client, lower staff development cost, lower cost to carry out the work, a sense of healthy competition towards better performance. And वही आपके disadvantages हैं: fees being shared, psychological problem where firms of different standings are associated, journal superiority complex, problems of coordination of the work areas of work of common concern being neglected, uncertainty about the liability of the work done. तो इसी के साथ आपका ख़त्म होता है ऐसे 299.